Do you feel your child is not living to the utmost potential in spite of getting all the comforts and services in today's life? आप सब कुछ उनको दे रहे हैं बट वो अभी भी अपनी जिंदगी पूर्ण रूप से नहीं जी रहे हैं. कुछ मिसिंग है, एक कम्युनिकेशन मिसिंग है, उनके कॉन्फिडेंस में समथिंग इज मिसिंग विच इज नॉट टेकिंग अप देयर इन द लाइफ. अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द टॉक. माय नेम इज राधा शालिनी. आई एम मदर ऑफ 2 angels, textile artist since 25 years. Have been working as a creative director with 𝗧𝗶𝗺𝗺𝗃 for 22 years. Lived my commercial life the best and now living my passion as an art therapist, mindset coach and art educator. So in this, I'm going to share a very simple story of Puneet, one of the very young boys, 10 years old, who lost all the hope. सब कुछ छोड़ दिया था उसको कुछ पसंद नहीं आता था. The parents were very worried. They tried to supply all the games, all the gadgets, but nothing was helping him. He was getting more and more aloof, started getting lower in the grades. तो सब चीजों में कमी आते आते it became a major concern. Through their friend, they came to know about the Mindful Expressive Art, where he was introduced to different activities, 15 minutes a day, every day, और उसने वो activities को करा. उन एक्टिविटीज को करने से उसने अपने आप को डिस्कवर किया. अपने आप को डिस्कवर ऐसे किया कि पहले उसने एक्सेप्ट किया कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उसके बाद उसने एक्टिविटीज करी जिसमें उसने अपने पैशंस को जाना और उन पे ज्यादा मेहनत करी. जब वो पैशन करने लगा तो एक वो जो एक लाइफ की उसकी एक स्फूर्ता थी, उसकी स्पिरिट ऑफ लाइफ स्टार्टेड कमिंग अप एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन लाइफ. द पेरेंट काउंसलिंग, हाउ इट हेल्प्ड इज कि वी जस्ट आस्क्ड द पेरेंट टू do a different kind of a communication with a child, कि उसको ये ना कहें कि तुम ऐसे हो गए हो या तुम डम हो गए हो या तुम ऐसा लोअर ग्रेड्स ला रहे हो, but in fact we said कि you try to ask him what is bothering him, how we can help you. So it helped to bridge that communication gap in between parents and child. And today I proudly say that the Puneet is a very happy and is doing well in school and has developed some skills like of self-confidence, self-esteem, persistence, resilience. वो एक अलग quality का उसमें आ रहा है and he's still continuing with the 15 minutes practice. If this relates with you somewhere, अगर थोड़ा सा भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो don't miss to attend my free master class which I'm doing on 14 November, morning 10 to 12 p.m. And there I'm going to share with you with the simple tips and techniques, a simple strategy which the child can follow to rewire their brain structure. अपने brain को अपने अकॉर्डिंगली मैनिफेस्ट करने के लिए इस क्लास में आप जरूर आइए, जानिए आप कैसे उन चीजों को अचीव कर सकते हैं और अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन के सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए. सी यू देयर.